Hello guys, now I'm going to talk about the process of replication. So what is replication? Replication is the process of formation of DNA from DNA. DNA की old chain से new DNA का formation, this process is known as replication. So replication involves two steps. First is unzipping. First step uh, first step for the process of replication is unzipping. In unzipping, um, the two chains of DNA is unzipped from each other. Means they they both are attached from hydrogen bonds, and that hydrogen bonds are breaked with certain enzymes and they get unzipped. So first thing is the point from where replication starts. The point from where replication starts, that point is known as initiation point. Initiation point. Suppose replication in this strand is starting from here, from this point. So this point will be known as initiation point. Okay. So next thing is for formation of new chains. First of all, we have to separate these both chains from each other, because the new chain will be synthesized on these old chains, and then a double stranded DNA will be formed. So we have to separate both of them. So first of all, we have to break the hydrogen bonds in between them. So for breaking hydrogen bonds, two enzymes are involved. Two enzymes, that is topoisomerase and helicase. These two enzymes act on these chains and break the hydrogen bonds in between them. So this is the initiation point. So from here, enzymes start acting on it and they start breaking these hydrogen bonds from this point. Let me show you that this is a chain, and on this helicase enzyme is acting. So after the action of helicase enzyme, this chain will become like this. This is the initiation point, means from here the breaking will start. So this will look like, so after that it will look like this. These are the polarities of both of the chains, 5 dash 3 dash. Okay. uh, in prokaryotes there are only one initiation point. In prokaryotes there are only one initiation point. Okay. But in eukaryotes, like in we human beings, there are many initiation points in the DNA chain. Okay. And this replication process is starts in an alkaline medium. In an alkaline medium, and Mg plus plus acts as a cofactor in this process. Fine. So we have separated both these chains. Now these chains have the tendency to recoil again. So for to preventing this tendency of them, to stop them from recoiling, there is an enzyme which act on it. That is helix destabilizing protein, that is HDP, which prevents these both chain to recoil again. If these recoil with them again, then they will become like this chain only, and they will again get their hydrogen bonds. So we have to prevent their recoiling. So for that, helix destabilizing protein acts on them. Fine. Now after that, we get two strands like this, but these two strands also have the to tendency for coiling. They can also coil. Okay. So for preventing that, another protein is required, single stranded DNA binding
protein. So for that, and it is known as SBB protein. To prevent these coils from preventing these coils to coiling, we use SBB protein. Okay, SBB protein acts on it. Fine. So this is the first step, and the second step is the formation of new chain from old chain. Okay, so this is the DNA which we get from first step. We get this type of a DNA which has a polarity 3 dash 5 dash 5 dash 3 dash. अब इसके ऊपर RNA primer will act on it. This is RNA primer. अब on this chain formation of new chain will start. अब इसके ऊपर नई chain बननी start हो जाएगी. उसके लिए RNA primer is required. RNA primer इसकी 3 dash end पर लगेगा और उसके बाद इसका new chain का formation करेगा. So from here the new formation of new chain starts, and in this chain, इस वाली chain पर इस हमेशा जो फॉर्मेशन होता है वो 3 dash एंड से ही स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होगा और इस वाली में यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका 3 dash एंड इधर है, तो इस वाली पर यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, और हमेशा जो न्यू चेन बनेगी उसकी पोलैरिटी हमेशा 5 dash to 3 dash होगी. तो अगर ये यहाँ से बननी स्टार्ट हो रही है तो इसकी पोलैरिटी होगी 5 dash to 3 dash और इसकी भी 5 dash to 3 dash. अब 2 टाइप्स की चेन्स बनेंगी. एक बनेगी लीडिंग स्ट्रैंड और वी कैन से कंटिन्यूस स्ट्रैंड, एंड द सेकंड वन इज लैगिंग स्ट्रैंड. That is discontinuous strand. ओके, तो यहाँ पर जो बन रही है वो है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड. यहाँ पर है जो वो है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड, और जो इधर बन रही है 3 dash to 5 dash वाली डायरेक्शन वाली चेन पर बन रही है वो है हमारी लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड. ठीक है, तो जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बनी होती है. अप्रॉक्स इसके अंदर 3000 to 4000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. उसके बाद में लेटर ऑन ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है या फिर हम कहें लैगिंग स्ट्रैंड है वो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाती है और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाती है. ओके, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है डेट इज़ DNA पॉलीमरेज थर्ड. DNA पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो होता है वो बहुत मेन रोल इसमें प्ले करता है, बिकॉज हमने सारे एंजाइम्स ने मिलकर इन चेन्स को सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए, नई चेन्स बना दी, कॉइलिंग होने से रोक दिया. बट यहाँ पर जो नई चेन्स बनेंगी, इन नई चेन्स को ओल्ड चेन्स से जोड़ने के लिए फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को DNA पॉलीमरेज थर्ड बनाता है. ठीक है, इन दोनों चेन्स को आपस में DNA पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जोड़ता है. अगर यही नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस हमारा वेस्ट जाएगा. सो दिस एंजाइम प्लेज द मेन रोल इन दिस प्रोसेस. ओके, सो this is it for this process. Okay, thank you for watching, and if you like this video please like, share and subscribe it. Thank you guys.